and C.dot team, they also are part of this journey with us. They have met Telit, they have shown confidence in Telit that if you come to India, we'll support them. And I think that has been a great partnership with DOT and C.dot, with all of us together are able to have this great change happening that manufacturing is coming to India for the telecom module. So that's the perspective, sir. I will just ask Mr. Paulo to speak 2 minutes and give his perspective on this partnership, sir. Thank you, Puneet. Good morning, Sri Ashwini, and I'm happy that you participate. Thank you that you participate in this event. It's an honor for us to be here. Telit Synthelion is a group that is the global Western leader in the IoT industry. We are an IoT enabler, and we need strong technological partner in the world. And we identified VVDN as our main partner now for the Indian market, but also for the base for exporting the modules all around. And we are sure that there is an opportunity of digital transformation in this country, like probably nowhere else. And we want to transform the made in India design and made in India manufacturing into something that will be terribly successful in the coming decades. So we want to be part of this game. We already have a center in Bangalore with many engineers working for our team. And this partnership with VVDN is for us a starting point for becoming Indian. And my team of management is almost always Indian at first level. So we are really proud of this opportunity. Thank you. To successfully set it up, and we did a test run also last week, but our production will start from today, and this is a great day for VVDN and I hope for India as well. So line that we have set up for Telit, this module production, this SMT line comprises mostly 3 stages. One kind of paste printing stage where the PCB gets pasted, and second one we do have we have a component placement stage and then reflow stage. There are 3 stages, and each and every stage, after each and every stage, there is a validation stages, couple of validation stages. So that's how the entire module is getting produced. This is the bare PCB that I have. This has 16 modules. It's a complex ultra fine pitch components. Though this is a small module, that's a very fine pitch component gets placed in this PCB. So even VVDN, when we produce the board, the same kind of module, this is Telit module that gets, this is how the final product, where the module also becomes a part of the product, gets shipped all over the India and the world. So this module not only we are producing, we are also shipping across the globe, and the millions of products gets connected to LTE due to this module. That's one thing. So one, based on all the government initiatives with whatever revolution going on in electronic industry, I think VVDN is gone to the next step from whatever products that we are building to next level. This is a component module manufacturing is a complex one, so we are stepping ahead to next stage of electronic manufacturing. I think from a small module to complex servers that VVDN is capable of manufacturing and then shipping the units around the globe. Mr. and Telit CEO, Mr. Paulo, to inaugurate the SMT line for Telit mass production. Thank you, Ashwini sir. Thank you, Mr. Paulo, for inauguration. Ashwini sir, some word from you. Always the whole India wants to listen to you. I think same here. Please, sir, give your perspective on this partnership, sir. This is really a matter of pride for all of us that such an advanced manufacturing process is now starting in our country, and this all goes back to about 9 years back when the leadership in the country changed and we got a leader who could think ahead, who could clearly lay out a vision, who could put enough energy and focus so that the vision gets implemented
And this is the result today. So I congratulate the VVDN team, I congratulate the Telit team, I congratulate all the employees present here, and especially the sisters who are present here. All of you are so talented that you will all make our country proud. मैं साथियों आपके सामने 3-4 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। आप देखो, एक लंबे टाइम तक देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट केवल और केवल इंपोर्ट होता था। देश में मैन्युफैक्चर होगा और एक्सपोर्ट होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ, एक फोकस के साथ काम किया, उससे आज अपने सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल से हम देश में गर्व कर सकते हैं अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर। 5G का लॉन्च हुआ लास्ट अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022। Within one short year, our country, Bharat, has become among the top 3 ecosystems for 5G. It's a matter of great pride. The way 5G was rolled out, the speed at which things were done, it's really a matter of great pride. In parallel, so many things were done to make sure that telecom manufacturing comes to India. I'm very happy to share with you that today close to 2,419 crore investment has actually happened in telecom manufacturing in India. The sales from these units has already topped 34,000 crore. Exports are 7,600 crore. And the most important thing is that by now employment in these units, supported by government's policy, supported by Prime Minister Modi ji's policy of PLI, the employment in these units is today 17,753. And this employment number is increasing day by day. Within the next few years, in telecom manufacturing alone, we will see close to 4,000 crore total investment, which is double of what has already happened, 44,000 employment, and 2,37,000 total sales revenue. This is a matter of great pride for all of us, because this shows how our talent, how our engineering talent, our ability to manufacture precision equipment is today recognized by the entire world. Today, telecom equipment manufactured in India is exported to many countries, including US, European countries, Japan. These are highly developed countries, and we feel proud that our products are today accepted as high quality. Many of the times, many of the lines, for example, this line today inaugurated, will be maintaining 6 Sigma quality standards. It will be having a class 8 clean room. So these are the things which distinguish us, which will place us in a very totally different level, and we should all strive, the partners, the ecosystem, and the government officers, we should all try and make sure that we maintain these quality standards, and we continuously strive to maintain the quality of the products and the consistency in our production systems. I thank you all for this great opportunity. We have reached many milestones, and we will be making sure that India emerges as a major telecom design, innovation, and manufacturing base. You would also be very happy that ITU has accepted our inputs in the standardization of 6G equipment, 6G standards. It's a great thing, and this process will be further strengthened in the coming years, and we hope
and we are working towards positioning India as a leading standards and IT contributor to the 6G journey. So this is the journey, and this all was possible only because our Prime Minister had a very clear vision of making India as a leader in telecom technology, leader in telecom manufacturing, and there are many critics. I would also like to reply to them, those who say that value addition is not there in India, should come and see this plant and see how much depth we are now acquiring in the telecom and electronics manufacturing. Very happy to know that VVDN already has 10,000 plus employees, and very happy to know even further that 70% of them are our sisters who are working on this. I would like to hear from the sisters, what do you think about this entire thing? बहनों, आप क्या सोचते हो और आपकी क्या सजेशन है, आपसे सुनना चाहूँगा। आफ्टरनून सर, मेरा नाम आकांक्षा द्विवेदी है। मैं यहाँ ऑपरेट करती हूँ। मैं इस कंपनी में पहली बार जब आए थे तब हमने पहली बार ये देखा कि जिन बाकी कंपनियों में लड़कियों को मशीन चलाने की कोई परमिशन नहीं थी, उस कंपनी ने हमें मशीन चलाने की परमिशन दी, और आज हम इतने कैपेबल हैं 3 साल में कि हम इस मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान समर्पित कर रहे हैं, और हमारे VVDN की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। हम इस कंपनी में काम कर कर आज उस रास्ते पर या उस हद तक हम सक्षम हुए हैं कि हम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम VVDN के साथ काम कर रहे हैं, और हमें आज इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है कि मैं VVDN के शब्द में कुछ कह सकूं। किस तरह से आप इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को हैंडल करते हो, कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है? मैं पहली बार कंपनी में आई थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इस मशीन को कैसे संभालना है, मशीन हमें संभालनी है। ये बहुत काफी महंगी मशीनें हैं, कहीं इसमें कुछ हानिकारक चीजें ना कर दे, हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो। पर धीरे धीरे हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया, हमें एक्सपीरियंस दिया, और आज मैं इतनी कैपेबल हूँ कि इस पूरे लाइन को अकेले हैंडल कर सकती हूँ, और पूरे अपनी टीम के साथ, सपोर्ट के साथ इस लाइन को हैंडल करती थी। ये अच्छा अनुभव है, बहुत ही प्यारा अनुभव है। मैं किसी को बताती हूँ कि मैं इतनी महंगी और इतनी अच्छी मशीनों को हैंडल कर रही हूँ तो वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। हमें भी आप पर गर्व है, और आपने जो सीखा है जितना हो सके दूसरी बहनों को भी सिखाना है। जी सर, नहीं जरूर। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। और कौन? गुड आफ्टरनून गीता यादव, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ काम करके 3 साल हो गए। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है, और हर दिन हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे कलीग्स, हमारे सर हमें सपोर्ट करते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हम इस मशीन को अकेले हैंडल करते हैं सर। पहले जब हम आए थे तो इसे बिल्कुल हैंडल करना कैसे करना है, तो हमारे सर, हमारी सीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं, उसे सिखाया, हमें बताया कि कैसे ऑपरेट करना है। आज हम इस पूरी लाइन को अकेले लीड कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनें आपने सीखी, सीखने में कितना समय लगा? सर, हमें हमारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया, ज्यादा समय नहीं लगा, बट लगा सर। आपको जब ये गर्व के साथ अपने कानपुर शहर में कहाँ रहते हैं आप? आपका परिवार कहाँ रहता है? पनकी सर। पनकी में, IIT के पास में? हाँ जी सर। मेरा सौभाग्य था, मैं IIT गया था, IIT कानपुर। कद्दू के लड्डू खाए आपने? यस सर, कद्दू के लड्डू खाए। बहुत अच्छे। तो पनकी में जब अपने परिवार के दूसरे लोगों को और साथियों को बताते हो आप कि ऐसी बड़ी मशीन हैंडल करते हो, तो कैसे बोलते हैं, क्या रिएक्शन रहता हूँ? सर, वो विश्वास नहीं करते कि मैं इतनी बड़ी मशीन हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं जब उन्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ कई चीजों को, तो वो गर्व महसूस करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप सब मुझे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। बहुत अच्छा। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर फील्ड में बेटियों को, बहनों को एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। यस सर।
अच्छा लगता है इससे? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। मेरा नाम पूजा मोरे, मैं बांदा जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से डेस्क शोल्डर पेस्ट प्रिंटर ऑपरेट करती हूँ और मुझे यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं। मोबाइल फोन कौन से प्रदेश में बनते हैं? उत्तर प्रदेश में देश के 60% से करीब करीब मोबाइल फोन बनते हैं। अच्छा लगता है सुन के? यस सर। अच्छा, अब एक और सेकंड में आपसे पूछता हूँ प्रश्न। आज से 10 साल पहले भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते थे उसमें से कितने भारत में बनते थे? मान लो 100 मोबाइल फोन यूज होते थे तो 100 में से कितने प्रतिशत भारत में बनते थे? 1%। बिल्कुल मिनिस्कुल 1%, 2%, राइट? आज कितने बनते हैं? 3% समथिंग। 98%। आज भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते हैं 98% भारत में बनते हैं। अच्छा लगता है किस तरह से मोदी जी ने जिंदगी अपने पूरे की पूरी जिंदगी बदल दी, एक तरीके से सोचने का तरीका बदल दी। ये इस प्रोग्राम का आपको नाम पता है? मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम का नाम। यस सर। तो आप सब मेक इन इंडिया के महारथी हो। यस सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. So much of motivation. इतने अब इतने उत्साहित हो गए कि मतलब अगले एक महीने खाने की भी जरूरत नहीं है हमको। We are so excited to hear all these things, right? I think Vaishnaw would like to also to say his perspective. Vivek. Ashwini sir, thank you for making time for this event. I know you're very busy right now, but after encouragement, after support, हमारे लिए वाकई में एक बहुत बड़ा फ्यूल, एक एनर्जी का काम करता है। And we are 100%, 200% committed कि हम आज जैसे टेलिट हमारे पास आए हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, we are committed to bring more and more तो ग्लोबल टॉप OEMs हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, हम उनको इंडिया में लेकर आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, IP क्रिएट करेंगे, इनोवेट करेंगे और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। We are very much committed and thank you for your time, sir, for joining us and for encouraging us. I also want to thank Paulo and the entire management team. A lot of Indians in the management team. So Paulo is very supportive of India, first of all. And Paulo, thank you. You have traveled from US. He was very busy. But because this event, he also flew into the country last night, and he's very excited and he's committed to do more in the country, sir. So thank you both for all the support and sir, VVDN is committed. Sir, जो आपने numbers दिए, वो numbers को exceed करना है, sir. In terms of employment, in terms of export, and in terms of revenue, we will exceed all your numbers. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. छोटी छोटी बच्चियों ने, बहनों ने, इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनों को हैंडल करने की ट्रेनिंग ली है और वो लोग इसको हैंडल करेंगे। मैं आपके सामने कुछ छोटे से फैक्ट्स रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एज ऑल ऑफ यू नो, PLI and telecom sector is today a major success story. Already the investment has crossed 2,000 crore. It is today 2,419 crore under the PLI scheme for telecom equipment. Sales in the PLI schemes for telecom equipment manufacturing PLI is 34,516. Exports are 7,600 crore and employment is 17,753. This is a big achievement for the country, that today in such a short time frame, India has emerged as a major telecom manufacturing and export hub. I also want to
congratulate all of you for the fact that India is today among the top 3 5G ecosystems in the world. All this was possible because of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's clear vision of making India a telecom leader in terms of design, in terms of manufacturing, in terms of service. Complete focus on deepening the ecosystem, complete focus on making sure that we get the best of the technologies developed in the country and become exported. I'd like to take questions now. Our industry, the telecom manufacturing industry in India is quite mature now, and within a very short time frame we have started exporting to US, to UK, to Netherlands, to France, to Spain, Austria, UAE, Japan, and many more countries. Such foreign companies like Telit to partner with Indian players in anytime soon, in coming months or something like that, in the telecom sector specifically? Yes, there will be many more companies who want to manufacture in India, and they are very happy with the design capabilities of our companies and very happy with the government policy. They are clearly placing India as a trusted value chain partner. Please mark my words, I am not saying supply chain partner. I am saying value chain partner. So by value chain partner, we mean that many of these countries want to get the design also done in India. So design, manufacturing, combined makes us a very, very important trusted value chain partner. Thank you, sir. A very major way under the Atmanirbhar Bharat program, our Prime Minister's focus has been on empowering and training and skilling some of our very young and energetic friends, and you have seen the confidence of those people who are working, those girls who are working on those complex machines. They are handling those machines with precision, they are handling those machines with a lot of confidence, and this is a trend that we will see continuously in the coming days. We will go to other places also soon, and we'll see that this is a very, very good success for the country. And this clearly shows how much our girls, how much our daughters and sisters they can achieve. Technologies like 5G and now 6G is the affordability. So how does the government plans to make it more affordable for general public? Excellent question, and I would like to address this in two ways. First is the cost of data. Cost of data and cost of 5G services is today equal to the cost of 4G services. And India's telecom sector has been rated by International Telecommunication Union, ITU, as the most affordable market in the entire world. So that's a matter of great happiness for us, matter of great satisfaction for us, because telecom sector feeds into the digital India, and all these services which ride on digital India, they are today accessible to the poorest of the poor, to the farthest locations at a very, very affordable cost. And the second point I would like to make is, because of the good success of our mobile phone manufacturing industry, today we have entry-level mobile phones which are 5G capable, 5G enabled. They are coming at 10,000 rupees, 11,000 rupees. So that's a great success, because this has helped us very rapidly achieve penetration of about 10 crore 5G subscribers in the country in a very short time frame, just 1 year. So this is possible because the mobile phones are affordable, and entry-level phones today available at 10,000, 11,000 rupees. Next week. So when we are talking about 5G and we are talking about artificial intelligence, IoT, so what are the challenges we are looking forward in that meet, sir, in the Indian Mobile Congress? So AI, IoT and telecom, all of them are basically converging towards one common theme. As you are aware, there is a lot of convergence in the digital world, and we can see that this is opening up new opportunities in industrial efficiency, in manufacturing efficiency, in transportation,
in healthcare, in education, multiple sectors, new opportunities are coming up. We are also aware of the risks of AI, and that's why we are going in a very measured way where we can use the benefits of AI, IoT, ML, and also simultaneously guard and keep our society safe. So you were in the G20 presidency, you were there at Gurgaon, and you talked about the cyber security, the threats. So which are looming now, sir? So how do we, Indian Yes. government, take care of that? We have taken many steps on this, and I'm also very happy to share with you that India's ranking in the global cybersecurity had significantly improved from about 40 something to among the top 10 in the world today. And many more steps are being taken by which we will be among the top 5 countries in cybersecurity preparedness also. बहुत सारे नौजवानों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज मिल रही है कि उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, और ये अपॉर्चुनिटीज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपने देखा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे नौजवान काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सीख रहे हैं, और अपने साथ ही साथ दूसरे और नौजवानों को भी वो लोग जोड़ रहे हैं, और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में एक एक फैक्ट्री में 20-20 हजार नौजवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की फैक्ट्रियां देश में डेवलप हो रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आज एक बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्यादा एक जोश है, और जैसा मैंने कहा डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के टेलीकॉम सेक्टर डेवलप हो रहा है। यानी टेलीकॉम सेक्टर में भारत एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर की तरह उभर रहा है। ट्रस्टेड वैल्यू चेन, सप्लाई चेन नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू चेन पार्टनर, जिसमें डिजाइन भी भारत में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो रही है, और इन इक्विपमेंट की दुनिया भर में सर्विस कैपेबिलिटीज, लाइफ साइकिल मेंटेनेंस, वो सब भी भारत से होता है। पीएलआई सपोर्टेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 17,753 नौजवान ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनको रोजगार मिल चुकी है या ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट की जो है वो पॉसिबिलिटी है क्या इन लोग की? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ ही प्लेसमेंट है। Syllabus contents and some parameters for the scholars, those who want to participate in innovations related to artificial intelligence and machine learning and other things which could be translated into the fields like agriculture. हाँ बिल्कुल, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया के तहत जो कार्यक्रम है सारे, उसमें कई सारे स्टार्टअप्स जुड़ सकते हैं। आपने देखा स्टार्टअप में भारत किस तरह से एक बड़ा हब बन के निकला है, तो जरूर आप उससे जुड़े और इसमें नई अपॉर्चुनिटीज का। VVDN unveiled its plan in expand in Europe under its new initiative. What is that, sir? Equipment for 5G, and we will be exporting, and our companies are supporting the entire telecom operations of many countries in the world. So we have today emerged as a leader, and this is very clearly thanks to our Prime Minister's vision. If you recall, last year IMC, 2022 IMC, and I invite all of you to join the IMC in coming few days. In last year IMC, Prime Minister gave us the target that we should emerge as a leader in 5G and 6G. The days of 2G and 3G, which were what they were, very full of corruption, full of taking the country back, those days are over. And today the country is looking forward under Prime Minister's leadership
तो इससे क्या होगा अभी, क्या बनाएंगे आप? कंपोनेंट्स हमारे जो ये है ना, जहाँ से सेल्स होता है फिर वहाँ से बफर में जाता है, बफर में। ये जो भी आपने इसके अंदर ये जो प्लेस किया है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, तो इसके बाद आपको क्या क्या करना है, ये आपको मालूम है कि क्या क्या करना है ना? अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप इसको कर दोगे तो ये किस काम आएगा? ये तो प्लेटफॉर्म लगा देते हैं तो फोल्डर जो है हमारा सेफ हो जाता है, अच्छा पकड़ता है। अच्छा, तो ये है क्या चीज़, मतलब क्या बनेगा इससे? ये जो हमारा लीवर का एरिया है, यहाँ पे जो भी हमारा जो डिफेक्ट रहता है उसको हम सही करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी डिफेक्ट रहेगा फोल्डर बाल वगैरह का, तो अभी आप सीख रहे हैं? यही करते अभी आप जॉब में हैं या सीख रहे हैं? अंडर हैं। अभी जॉब में हैं। तो कितने दिन में आप ये सीख पाए? सर इसको सीखने में मुझे 15 से 20 दिन लगा था पूरा सीखने में। बस उसके बाद 15-20 दिन के बाद आप जो है इसमें सिर्फ एक मशीन के बाद मशीन चलाने में? हाँ। वेरी गुड। मेरा घर अलीगढ़ है, यूपी। तो इधर कहाँ रहती है? यहाँ पीजी में, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है। हाँ, गर्ल्स क्या हॉस्टल है? हाँ, अच्छा लगता है? हाँ, नहीं बोरिंग नहीं होता, बस समझ आता है। आप कहाँ से पढ़ाई की? मैं रोहतक से। रोहतक से? अच्छा, हरियाणा से। काम करना बहुत अच्छा है। आपको कैसे पता चला? ये हमारा कॉलेज की। अच्छा, प्लेसमेंट हुआ था।
more factories in Manesar itself, mechanical factories जहाँ पे mechanical की tooling होती है, उसकी injection molding होती है, die casting होती है, वो सब हम internally casing निकाल के we bring that to production floor और PCB को हम casing के अंदर fit करके उसका product का final testing करते हैं. And good thing is कि जब ये प्रोडक्शन हो जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है. सो वी डू दैट प्री कंप्लायंस इन हाउस. वी हैव अवर ओन रिलायबिलिटी लैब, यू नो, बेस्ट इन क्लास, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल चैम्बर्स हैं, वाइब्रेशन चैम्बर्स हैं, यू नो, बेस्ट इन क्लास मशीनरी, आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए यूज होना था, हार्श एनवायरमेंट्स के लिए, वो सारा हम अपनी लैब में प्री कंप्लायंस उसकी टेस्टिंग करते हैं. एंड देन वी सेंड इट टू द लैब्स फॉर द फाइनल सर्टिफिकेशन. सर्टिफाई होता है प्रोडक्ट की पैकेजिंग और अपने कस्टमर को हम फुल्ली पैकेज प्रोडक्ट देते हैं. एंड दैट इज आवर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन. कल हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी यंग पॉपुलेशन. वो सारे गैजेट्स ये सब यूज करते हैं. तो कैमराज ले लो आप, आपका TWS, आपके जो डिवाइसेस होते हैं आजकल एयरपॉड्स की तरह जो डिवाइसेस होते हैं, TWS डिवाइसेस, स्पीकर्स ले लो, कैमराज ले लो, सिक्योरिटी सर्वेलेंस. आजकल गाड़ियों में बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है. ADAS सिस्टम आ गया है, टेलीमेटिक्स है, इंफोटेनमेंट है. ये सारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं. बट हम लैपटॉप्स, टैबलेट्स, सर्वर्स, तो ये सारे काइंड ऑफ लाइक हमारे जो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हम यहाँ पे डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए. जब हमारे कस्टमर्स फिर हमसे ये बनवा के फिर वो मार्केट में इसको सेल करते हैं, इंडिया में भी और ग्लोबली भी. कम्युनिकेशन मॉड्यूल बनाती है कंपनी. We have established a partnership with Telit, which is a US-based company for manufacturing of telecom modules for 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, and also including smart modules. This is a very unique partnership where VVDN would be manufacturing, designing, and doing a lot of innovation for these telecom modules. These telecom modules will go into many products including IoT, automotive, networking, telecom, in all the different domains. And also I think this is the first kind of partnership happening in India where we are able to bring a market from the whole world and we'll be delivering these modules to every customer in the global arena. Telit is a very strong partner for VVDN and this partnership will go very long for next several years. This will also help us in be not only VVDN but also India becoming a major design, innovation and manufacturing face off for the whole world for telecom industry. These telecom modules what we're going to manufacture in 4G and 5G and then eventually 6G also would not only be used in domestic India market but also would be used in the whole global market. So it is very unique partnership and I'm very confident that this will change the way everybody look towards India for telecom manufacturing. Telit सेंटोरिन के साथ जो एक US की कंपनी है इरवाइन से, उनके साथ पार्टनरशिप किया है जिसमें हम उनके टेलीकॉम मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं. ये बहुत यूनिक पार्टनरशिप है जहाँ पे ये सारा काम जो बाहर होता था इंडिया से उसको हम इंडिया में लेके आ रहे हैं और इंडिया में सारा टेलीकॉम मॉड्यूल बनेगा और हर कस्टमर को ग्लोबली डिलीवर होगा. ये टेलीकॉम मॉड्यूल डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट एरियाज में जाएंगे, जैसे IoT में, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास, ऑटोमोटिव के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, हर वर्टिकल के अंदर ये टेलीकॉम मॉड्यूल जाएंगे एंड इट विल ओपन अ बिग मार्केट फॉर इंडिया. मैं यही आशा करता हूँ कि हमारी ये पार्टनरशिप अगले 5 साल में इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाएगी जहाँ पे हर ग्लोबल कंपनी इंडिया के लिए टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से आगे सोचेगी. VVDN is committed to do electronic product design and manufacturing. Over years, over the last 16 years, we have been engaged with a lot of global companies in designing their electronic products and now we are moving their manufacturing to India. In that process, we have set up world-class manufacturing facility. We have 8 SMT lines, we are doing injection molding, die casting, cooling. We are creating all the facilities internally to manufacture, design all these electronic products from India. We are committed to do more. We are bringing more and more brands to India. We are adding more SMT lines internally. And as a result of all this is also leading to huge job creation and as VVDN enabling women empowerment
and we are creating more jobs for women. So if you see, a lot of our manufacturing lines are being run by women internally. So we are here to create more jobs, more products, create, innovate, produce. That's the motto of VVDN. Thank you.